the other congruence condition of triangle, that is angle side angle ASA. See the example, triangle ABC and triangle DEF. यहाँ दो triangles हैं. Angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F. आप देखिए दिया गया है. And BC is equal to EF. BC और EF भी equal हैं. इस तरह से ये दोनों triangles by congruence condition ASA congruent हैं. Okay. Now here you can see one more thing, that this is the definition. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are respectively equal to the two angles and the included side of the other triangle. This is the ASA congruence condition. Okay. Yes. Here you can see this. If in two angles and any one side are equal to the corresponding two angles and one side of other triangle, the triangles are congruent. So the condition AAS leads to ASA. आप ध्यान रखेंगे कि AAS भी ASA congruence condition उसको हम कहेंगे और उस तरह से triangles congruent proof होंगे. Now let us do some questions of worksheet 3. Now let us do worksheet 3. Worksheet 3. Worksheet 3 में question number 1 दिया गया है in figure 9.28 एंगल P इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री. यहाँ दो फिगर्स दिए गए हैं. यू कैन सी हियर लाइक दिस. PQR and XYZ. ओके. दिया गया है एंगल P इक्वल टू एंगल Y. एंगल P इज इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू 40 डिग्री. ओके. and angle Q equal to angle Z. Angle Q is equal to angle Z, that is equal to 60 degree. Next, find the third pair of corresponding parts which make triangle PQR congruent to triangle YZX. YZX by ASA congruence condition. So, solution is in triangle PQR and triangle YZX. Angle P, angle P is equal to angle Y equal to 40 degree given, and angle Q equal to angle Z equal to 60 degree. ये दोनों conditions दिए गए हैं. The question is what additional find the third pair of corresponding parts which make triangle PQR and triangle YZX congruent by ASA congruence condition. So, the third condition, the third pair of corresponding parts which make triangle PQR and triangle YZX congruent are, therefore, the third pair of corresponding part will be PQ. PQ equal to YZ. PQ YZ के बराबर अगर होगा
तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे बाय ASA congruence condition. ASA एंगल साइड एंगल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. Now let us do question number 3. Here you can see QX bisects angle PQR. QX PQR एंगल को बाइसेक्ट करता है यानी दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है. सेकेंडली एज वेल एज एंगल PSR. PSR को भी बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में बांट देता है. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये भी इक्वल हैं. State the 3 facts needed to ensure that triangle QRS is congruent to triangle QPS. Triangle QRS is congruent to triangle QPS. So let us solve it. Solution. In triangle QRS and triangle QPS. Angle, let us name it. Angle 1 is equal to angle 2. Given क्वेश्चन में दिया गया है क्योंकि उसने बाइसेक्ट किया है QX ने. And angle 3 is equal to angle 4. It is also given. Third statement is QS is equal to QS common. QS is equal to QS. It is the common side. Therefore, by ASA congruence condition, triangle QRS is congruent to triangle QPS. You can do this. Give reasons for each statement. आपको सारे statement का reason देना है. And here are the 3 facts. The reason is given. You can write. Now let us do question number 4. Question number 4 में figure दिया गया है जिसमें angle PS bisects angle P. PS एंगल P को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR. PS इस पे परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज फाइंड द 3 pairs of matching parts to check whether triangle PSQ and triangle PSR are congruent or not. Okay? ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं आपको प्रूव करना है. So in triangle PSQ and triangle PSR इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल, let us name it again, angle 1 is equal to angle 2. The reason is what? Given, bisect किया है. Angle 3 is equal to angle 4. It is also given क्योंकि PS perpendicular है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा. The third part is PS equal to PS. PS equal to PS and the reason is common. So by SAS congruence condition, ASA, therefore by ASA angle side angle, ASA congruence condition, triangle PSQ is congruent to triangle PSR. You can see here. Now second part is triangle PSQ congruent to triangle PSR?
The reason is, the answer is yes. Yes, triangle PSQ is congruent to triangle PSR. We have already proved. Third, SR. The reason is yes. Yes. QS is equal to SR. And the reason is because, by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles. ये दोनों equal होंगे. Now let us do question number 5. Question number 5 में दिया गया है कि AO is equal to BO. ये दोनों equal हैं and angle A is equal to angle B. Angle A is equal to angle B. Now question 1. Question 1 here is angle AOC? Angle AOC, this angle 1 and angle 2. Let us name it. It is 3 and angle 4. Okay. Now, first is angle AOC equal to angle BOD? Why? क्या एंगल AOC एंड BOD यानी एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा? एंड द रीज़न शुड बी गिवन. सो द आंसर इज येस. एंगल AOC is equal to angle BOD and the reason is vertically opposite angle. ये दोनों intersecting lines हैं और इस तरह से ये vertically opposite angle हैं, so they are equal. Vertically opposite angles are always equal. So second is triangle AOC congruent to triangle BOD by ASA congruence condition? The answer is yes, because we see that angle 1 equal to angle 2, vertically opposite angle. Angle 3 is equal to angle 4 given, and AO is equal to BO. It is also given. So, by ASA congruence condition, these two triangles are congruent. Third question here is, third question पूछा गया है, is angle ACO? Is angle ACO? It means this angle. Angle ACO is equal to angle BDO. The reason will answer will be yes. Angle ACO is equal to angle BDO by CPCT. Corresponding part of congruent triangles. CPCT के द्वारा ये corresponding parts equal होंगे. So this is question number 5. अब हम करेंगे वर्कशीट 4, RHS
के द्वारा इसमें ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। AB और AC ये दो साइड्स इक्वल हैं, ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंड AD इज द अल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। AB ऑल्टीट्यूड है यानी कि BC पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज, क्वेश्चन 1 हियर इज ट्रायंगल ABD, is triangle ABD congruent to triangle ACD? The reason should also be given. So let us check first. In triangle ABD, solution, in triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC. The reason is they are the equal parts of isosceles triangle. Okay. Second is angle 1 is equal to angle 2 is equal to 90 degree. It is given क्योंकि AD altitude है. And the third is AD equal to AD. AD equal to AD, common. So what we see? Hypotenuse, angle and side. By hypotenuse, one angle and side, they are congruent by RHS congruence condition. Therefore, by RHS, right angle, hypotenuse and side, triangle by RHS congruence condition triangle ABD is congruent to triangle ACD. Okay, in these two triangles you can see here hypotenuse is equal, there is right angle also in both triangles, and this is the common side. So by this they are congruent. Second question here is, state the three pair of matching parts you have used to answer 2. आपको ये तीनों pairs लिख देने हैं for answer 2. You can write from the above. And the third is it true to say that BD equal to CD? Third question is BD equal to CD and why? The answer is yes, BD equal to CD, and the reason is by CPCT, corresponding part of congruent triangles. Let us do question number 3. QS is equal to RT. QS is equal to RT. ये दोनों sides equal हैं, दिया गया है. Are the altitudes of triangle PQR, ये altitudes हैं यानी कि ये side इस पे perpendicular होगा और ये side इस पे perpendicular होगा. Next is and QS is equal to RT. QS is equal to RT. Okay, it is given. So मैंने पहले क्या बोला? Now let us do question number 3. Question number 3 में दिया गया है कि QS and RT are altitudes of
ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू एस एंड आर टी ऑल्टीट्यूड्स हैं, यानी क्यू एस पी आर पे परपेंडिकुलर है एंड आर टी पी क्यू पे. नेक्स्ट इज दे आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. नेक्स्ट इज क्यू एस इक्वल टू आर टी, क्यू एस एंड आर टी ये दोनों इक्वल हैं, यह भी दिया गया है. फर्स्ट क्वेश्चन नाउ इज ट्रायंगल क्यू आर एस, इज ट्रायंगल क्यू आर एस congruent to triangle RQT by RHS congruence condition? Let us solve it. Solution. In triangle QRS and triangle RQT, triangle QRS and RQT, QRS and RQT, angle S is equal to angle T, angle S is equal to angle T equal to 90 डिग्री दिया गया है. वो ऑल्टीट्यूड्स हैं इसलिए इक्वल हैं. नेक्स्ट क्यू एस, क्यू एस इज इक्वल टू आर टी. It is also given. The third part is QR is equal to QR, or you can say RQ. The reason will be common. So what we see, these two triangles are congruent by right angle, hypotenuse, hypotenuse, this is hypotenuse and side, okay, right angle, hypotenuse, common hypotenuse you can say here. So common hypotenuse is there. So by right angle, side and hypotenuse, these two triangles are congruent. These two triangles are congruent by RHS. Second is state the three pair of corresponding parts which make triangle QRS and triangle RQT congruent. ये three parts आप लिखेंगे क्वेश्चन 2 के आंसर के लिए. In this way you can do this.